Allah who is most kind and most merciful. आज हम एक मोटिवेशनल क्लास लेते हैं। जब मैं मैट्रिक में था तो हमारे टीचर ने जो है हमें 3 सेंटेंसेस बताए थे और वो 3 सेंटेंसेस जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। वो 3 सेंटेंसेस जो है वो क्या है? वो 3 सेंटेंसेस जो है वो मैंने बोर्ड पे लिख के। Number first sentence is that if wealth is lost, nothing is lost. If wealth is lost, nothing is lost. Here from wealth we mean your land, your property, your business, whatever is that. If wealth is lost, nothing is lost. If you lose your land, your building, your business, so means you have not lost anything. Because wealth is what? Wealth is the dust of hand and it can be earned again and again in life. पहला जुमला जो है वो क्या है? पहला जुमला ये है कि if wealth is lost, nothing is lost. अगर आप की जो है क्या है, जमीनें हैं, जायदादें हैं, बिजनेस है, गाड़ियां है और आप इसको खो जाते हो, ठीक है, तो मीन्स आपने किसी चीज को भी नहीं खोया, क्योंकि दौलत जो है ये जिंदगी में आता रहता है अगर आप जिंदा हो, ठीक है। तो दौलत जो है इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यू कैन अर्न इट अगेन एंड अगेन एंड इट कम्स टू यू आल्सो अगेन एंड अगेन, ठीक है। नंबर सेकंड सेंटेंस इज व्हाट? नंबर सेकंड सेंटेंस इज दैट इफ हेल्थ इज लॉस्ट, something is lost. Suppose you lose your ear, your nose, your arm, your foot, or any part of your body, you lose it, so means you have lost something, and then the people will not call you a perfect man. दूसरी जुमला जो है ये क्या है? इफ हेल्थ इज लॉस्ट, अगर आप अपने सेहत खो जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, या सेहत का कोई हिस्सा आप खो जाते हो, ठीक है, समथिंग इज लॉस्ट, तो मीन्स कि आपने कुछ ना कुछ खोया। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो है कान चला जाता है, ठीक है, या नोज ये चली जाती है, या जो है हाथ खुदा न खास्ता, या जो है पाँव, कोई एक भी चीज जो है आपकी बॉडी का जो है वो चला जाता है, टू मीन्स समथिंग इज लॉस्ट, आपने कुछ ना कुछ खोया, ठीक है। नंबर थर्ड सेंटेंस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Number third sentence is very important in our life. If character is lost, everything is lost. If you lose your character, so means you have lost everything. So from character here we mean your honesty, your loyalty, your behavior, etc. अगर आप जो है अपना करेक्टर खो जाते हो, ठीक है, तो फिर the people will not believe on you, the people will not call you an honest man, the people will not call you a lying man. इसी तरह अगर आपका बिहेवियर जो है, आपका रवैया जो है वो किसी के साथ अच्छा ना हो, ठीक है, आपका रवैया अच्छा ना हो किसी के साथ, और ये मसलन किसी के साथ आप जो है पॉजिटिव रवैये में या पॉजिटिव बिहेवियर में जो है आप नहीं मिलते, तो मीन्स यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग. सो करेक्टर इज व्हाट?
जिसको हम अखलाक भी कहते हैं। ठीक है, अखलाक। अगर आपकी अखलाक दुरुस्त नहीं है मीन्स तो कोई भी बंदा आपके साथ लेन देन नहीं करेगा। तो करेक्टर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी जिंदगी में, और हमें चाहिए कि हम क्या करें, हम अपना करेक्टर को क्या करें, इम्प्रूव करें।